Hello everyone, welcome to ITLS Academy. This is your mentor Dr. Shamaita Basu, and in this session we will be moving on to the fourth part of the topic of working with nucleic acids. So I think this will be the last part of this topic. So after this we will be moving on to the next subtopic. I think that is tools of genetic engineering. Okay. So I think in the last topic I had started with setting up of PCR reaction, where I had discussed with how much template we should take and all. Okay. So now the next step of setting up of PCR reaction will be, again, before starting I would like to say that if you have not yet watched the third part, that is the previous video, previous lecture, then please go back and watch that lecture, then only come back and see this, because otherwise you will not be able to keep track and understand. Okay, because in the last video I have talked about polymerase chain reaction. Okay, so what is actually PCR, what are the different aspects of PCR, that those things will be available in that video. Okay. Okay, so here we will be firstly talking about preparation, or what is the utility of master mix, and how will we prepare that master mix, what will be the recipe of the master mix, what are the components of the mix, because master mix is very important part of the PCR reaction. Okay, and why it's known as master mix? Because master means, we all know what is master means which regulates everything, isn't it? And mix is also something that we know. So why it's known as master mix? Because in PCR, whatever elements or whatever components we are using, whether it's the template DNA or the DNTPs or the primers or the water or the MgCl2, all these components, they are required in very small amounts. Okay, each and every amount you can see over here, each and every amount is in microliter. Okay, so you can imagine that how less quantity is required, isn't it? Microliter means, you can imagine, one third of a milliliter. So it's very less amount. Okay, so it's something which is very sophisticated. It requires expertise, and it's a very sensitive process. Okay, so if we you know add each of these components in so much minute amounts differently, one by one, each and every अलग अलग करके अगर हम डालेंगे, so it will be, एक तो it will be very tedious, secondly chances of error will be very much more. Okay, and also it will be very difficult for the person who is performing the reaction. ओके, और अमाउंट में भी थोड़ा इधर उधर हो जाएगा, इसलिए प्रिपरेशन ऑफ द मास्टर मिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि मास्टर मिक्स में हम ये सारे कंपोनेंट्स एक साथ करके, उसके बाद वी आर हैविंग अ टोटल वॉल्यूम जिसमें हम वाटर भी ऐड करेंगे, एंड देन वी विल बी सिंपली लोडिंग दैट मास्टर मिक्स इनसाइड द machine. Loading means we will be just placing that master mix inside the PCR machine, that is the thermocycler. तो उसमें हमारा टाइम भी कम लगेगा, हमारा मेहनत भी कम लगेगा, और हमारा काम भी हो जाएगा. So that is the utility of the master mix, and that is why it is known as master mix. क्योंकि एक बार तुमने अगर master mix बना लिया है, that means your part has been done for PCR. उसके बाद जो करेगा वो machine करेगा, वो thermocycler करेगा, and then you have to just analyze your results using the software and all in the computer. Okay, but otherwise the your job will be done. So that is why it's known as master mix, कि एक ही में तुम्हारा सारा काम हो जाएगा. Okay, so let's see what are the components. So firstly we will be having template DNA, जिसका amount होगा around 25 to 100 nanogram per microliter. That should be the the quantity of your template DNA. And उसको हम कितना लेंगे? Only 1 microliter. Okay, then we will be preparing a buffer, okay, which is 10x PCR buffer. I think you know what is the meaning of this x. So it is the stock solution, जो stock हमारे पास रहेगा, तो उसका 10x हम लेंगे. ठीक है, and that buffer will be containing MgCl2, तो उसका हम 2.5 microliter लेंगे. उसके बाद we will be taking 10 millimolar of the DNTPs, जो हम लेंगे अराउंड 2.5 माइक्रोलीटर. उसके बाद हम 10 माइक्रोमोलर ऑफ फॉरवर्ड प्राइमर लेंगे, एंड 10 माइक्रोमीटर ऑफ माइक्रोमोलर ऑफ रिवर्स प्राइमर लेंगे. दोनों ही हम लेंगे इन द सेम क्वांटिटी ऑब्वियसली, सो दोनों ही 0.5 करके लेंगे. ठीक है, और दोनों का ही जो कंसेंट्रेशन है माइक्रोमोलर, दैट शुड ऑल्सो बी द सेम. तो सो फॉरवर्ड का भी 10 माइक्रोमोलर, रिवर्स का भी 10 माइक्रोमोलर, और फॉरवर्ड का भी 0.5 माइक्रोलीटर लेंगे, रिवर्स का भी 0.5 माइक्रोलीटर लेंगे. ओके, बिकॉज दोनों का काम सेम है, सो बोथ ऑफ देम आर इक्वली इंपॉर्टेंट फॉर अस. सो द अमाउंट्स एंड कॉन्सेंट्रेशन विल ऑल्सो बी द सेम.
उसके बाद coming to the most important thing, that is the DNA polymerase, which is the tag polymerase, most important component of PCR. Very sorry, my voice is cracked. So उसका concentration क्या होगा? 5 units per microliter. Okay, U for units, and that will again we will take in 0.5 microliter amount. Okay, so see, forward primer, reverse primer and tag polymerase तीनों का ही volume same है 0.5 microliter. And lastly we have to take water. Okay, double distilled water लेना है और water का amount सबसे ज्यादा होगा 17.5 microliter. See, so basically टोटल वॉल्यूम हमें करना है 25 माइक्रोलीटर से कम हम नहीं कर सकते क्योंकि इट्स अ वेरी लेस अमाउंट. सो मिनिमम हमें टोटल वॉल्यूम अगर 25 माइक्रोलीटर करना है तो उसमें से सबका अमाउंट फिक्स्ड है. टेम्पलेट डीएनए कितना लेना है, बफर कितना लेना है, डीएनटीपी कितना लेना है, फॉरवर्ड प्राइमर, रिवर्स प्राइमर, टैग पॉलीमरेज, एवरीथिंग इज फिक्स्ड वॉल्यूम एंड कंसंट्रेशन. तो उसके बाद जितना बचेगा 25 बनाने के लिए उतना हम पानी डालेंगे, सीधी बात. ठीक है, तो कितना बच रहा है इफ वी एड अप ऑल दिस, तो जितना हमारा बच रहा है वो होगा 17.5 माइक्रोलीटर. सो दैट अमाउंट ऑफ वाटर वी हैव टू टेक, बट we have to be very careful that that water should be double distilled. ठीक है, ना तो टैप वाटर लेना है, ना तो नॉर्मल डिस्टिल वाटर लेना है, ना तो ऑटोक्लेव वाटर लेना है. ओनली डबल डिस्टिलेशन किया हुआ पानी हम दे सकते हैं फॉर पीसीआर, बिकॉज अदरवाइज इट विल बी contaminated. Okay, so what are the things that are present in the master mix? Like again just brush up. So first we have template DNA, देन वी हैव आवर पीसीआर बफर जिसमें MgCl2 दिया हुआ होगा. MgCl2 क्यों इंपॉर्टेंट है इतना? बिकॉज द Mg2 plus ions are responsible for giving stability to the DNA double helix and also for maintaining the the integrity. Okay, तो इसके लिए MgCl2 रहेगा. उसके बाद DNTP देंगे. उसके बाद हम फॉरवर्ड प्राइमर और रिवर्स प्राइमर देंगे. ठीक है, वी हैव अ टेंडेंसी टू से कि प्राइमर डालना है, प्राइमर डालना है, बट वी हैव टू रिमेंबर कि प्राइमर हमारा 2 टाइप्स का होगा और दोनों अलग अलग करके हमें डालना पड़ेगा इक्वल अमाउंट्स में बट सेपरेटली. सो एक होगा हमारा फॉरवर्ड प्राइमर, एक होगा हमारा रिवर्स प्राइमर, और उसके बाद लास्ट में हमें देना है टैग पॉलीमरेज. एंड देन फाइनली जितना बचेगा टू मेक द टोटल वॉल्यूम 25 माइक्रोलीटर उतना हमें वाटर देना होगा. ठीक है, अब हो सकता है इसमें कौन सा वेरिएबल होने का सबसे ज्यादा चांस है? दैट इज आवर टेम्पलेट डीएनए, isn't it? Depending on what type of DNA sample we are using, what type of PCR we are doing, how many cycles of PCR we are doing. So depending on that template DNA का amount change हो सकता है. So यहाँ पे 1 माइक्रोलीटर है, template DNA का amount 2 माइक्रोलीटर भी हो सकता है. So अगर template DNA हम ज्यादा ले रहे हैं तो वाटर का अमाउंट ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा, isn't it? अगर यहाँ पे 1 माइक्रोलीटर के जगह में 2 माइक्रोलीटर ऑफ टेम्पलेट डीएनए होता तो वाटर का अमाउंट ऑटोमेटिकली 15.5 हो जाता, isn't it? So accordingly we have to calculate the amount of water keeping in mind that the total volume should be 25 microliter. Okay, okay, so the volume of template DNA added might vary, exactly what I said. Suppose your concentration was only 10 nanogram per microliter. In that case, you have to add between 2.5 and 4 microliter of template. Then you will decrease the amount of water added to keep the total volume at 25 microliter. मतलब total volume हम 25 microliter से ज़्यादा नहीं करेंगे, ज़्यादा भी नहीं, कम भी नहीं. Ideally 25 microliter हमारा total volume होगा of the master mix. Okay. If your nucleotide mix is more concentrated, you would add less and then increase the amount of water to keep the total volume constant. Notice that in the above recipe there are some very small volumes. जैसे कि हमारा टैग पॉलीमरेज, हमारा रिवर्स प्राइमर, फॉरवर्ड प्राइमर, ये सब not even 1 microliter. It's only 0.5 microliter, isn't it? और वो भी you have to measure. That also you have to measure and you have to take it in a micropipette and then you have to transfer it to the PCR tube, isn't it? So it's a very expertise and very tedious work. Okay, for this and other reasons, it is common to make a master mix for PCR. We combine larger volumes of all the common ingredients to multiple PCR reactions, mix it well, and then pipette some of this mix into multiple PCR tubes. So basically, हम जो master mix सबसे पहले बनाएंगे वो सिर्फ 25 माइक्रोलीटर का नहीं बनाएंगे, वो हम बहुत सारे पीसीआर रिएक्शंस का एक साथ बनाएंगे. क्योंकि सी व्हेन वी आर परफॉर्मिंग रिसर्च, व्हेन वी आर डूइंग रिसर्च इन अ लैबोरेटरी,
इट्स नॉट दैट कि एक पीसीआर हम एक ही बार करेंगे और जिंदगी में कभी भी नहीं करेंगे, ऐसा नहीं होता है, isn't it? So we have to, as a researcher, as a PhD scholar, or as a, as a junior researcher or senior researcher, we have to perform, we have to repeat each and every experiment several times. तो उस हिसाब से वी विल बी प्रिपेयरिंग द मास्टर मिक्स. अगर हम एक डीएनए सैंपल से अगर हम पीसीआर करने जाएंगे, सो एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स हम सोचेंगे कि वो पीसीआर हमें करना है. सो अकॉर्डिंगली वी विल बी प्रिपेयरिंग द मास्टर मिक्स एट वंस, एक ही बार में हम बना लेंगे. उसके बाद जितना मुझे चाहिए उतना हम बस लोड करके डाल देंगे. ठीक है, तो सोचो हम 100 माइक्रोलीटर पीसीआर मिक्स हम बना लिए, तो उसमें से 25-25 लेके हम 4 बार पीसीआर आराम से कर सकते हैं. ठीक है, सो दैट इज द कॉन्सेप्ट. Then we add the reagents that are unique to each reaction. This approach will accomplish two things. First, it means that you do not have to try to get 0.5 microliter of enzyme or primer into each PCR reaction. It is easy to make a mistake and end up leaving out an essential component of the reaction. And the second benefit is that there is less, if there is a contamination is in one of the reagents and something has been left out of the mix, you can sometimes determine it when the reagent is contaminated or missing. So the use of a master mix can help with troubleshooting. Okay. Now talking about primer considerations. What type of primer we will be using, and that will be depending on the type of DNA that we are trying to amplify. What is our gene of interest, what is our target DNA? So that's why it's very important whenever, because पीसीआर प्राइमर जो है वो हमें खुद डिजाइन करना पड़ता है. ओके, वी हैव टू डिजाइन द प्राइमर ऑन आवर ओन, वेदर इट्स द रिवर्स प्राइमर और द फॉरवर्ड प्राइमर. So that's why in order to design a primer, it's very important to know what we are trying to amplify. So we need to have a clear idea about our gene of interest. और जीन ऑफ इंटरेस्ट का जो सीक्वेंस है, हमारा डीएनए का जो सीक्वेंस है, वो हमें एकदम अच्छे से जानना है, तभी जाके हम प्राइमर ढूंढ सकते हैं और प्राइमर डिजाइन कर सकते हैं. ओके. Okay, so usually if you want to amplify just one particular sequence, in usual cases, in this case we must ensure that the primer sequences we use are unique. If our primer can recognize many targets in the genome, we will amplify many of the wrong bands. You can do a blast search with your primer sequence to check that it only aligns with one target in the genome of your research organism. So that is very important कि जो primer हम choose करेंगे, it should align with only one target site in the genome. ऐसा नहीं है कि वो several target sites के साथ जुड़ जाए. In that case, we will be having the wrong product. Okay. And what is this blast search? I will just highlight it for you. So blast search NCBI बोल के एक website है, National Center for Bioinformatics Information. Okay. So in that NCBI website, we have different programs. It's basically a bioinformatics based website. We also conduct from ITLS Academy, we conduct various courses on bioinformatics also. So if you want to participate in those courses, or if you have already participated in those courses, then you also already, I think you have an idea about what is BLAST and what is NCBI and all. तो उसमें जाके कुछ नहीं करना है, बस अपना प्राइमर सीक्वेंस डालना है and you can have a blast search. You will just have to type on the blast search, so they will do the search on your behalf, and then you will be able to understand, or you will be able to have an idea about कि तुम्हारा जो प्राइमर है वो कौन सा टारगेट सीक्वेंस के साथ अलाइन कर रहा है. बिकॉज अलाइन मीन्स it has to be complementary, isn't it? Then only there will be best pairing and you will be having the amplified DNA. So the primers must be complementary to the sequences they target, exactly what I said. If you think about a double-stranded DNA molecule that you want to amplify, the forward primer will have the same sequence as the upper strand and it will bind to the lower strand. मतलब if we talk about the forward primer और reverse primer में difference क्या है? Forward primer जो है वो upper strand का, तुम्हारा DNA का जो upper strand है उसके साथ same sequence रहेगा, और जो लोअर स्ट्रैंड है डीएनए का उसके साथ कॉम्प्लीमेंटरी होगा, दैट इज द फॉरवर्ड प्राइमर. और जो रिवर्स प्राइमर है वो उल्टा होगा, वो लोअर स्ट्रैंड के साथ सेम सीक्वेंस में रहेगा और अपर स्ट्रैंड के साथ वो कॉम्प्लीमेंटरी होगा. सो दैट इज द डिफरेंस बिटवीन फॉरवर्ड एंड रिवर्स प्राइमर, एंड दैट इज व्हाई वी रिक्वायर टू डिफरेंट प्राइमर्स. हमें फॉरवर्ड प्राइमर भी चाहिए, हमें रिवर्स प्राइमर भी चाहिए, बिकॉज वी वांट टू एम्पलीफाई बोथ द स्ट्रैंड्स, है ना.
डीएनए का अपर स्ट्रैंड भी मुझे एम्पलीफाई करना है, लोअर स्ट्रैंड भी मुझे एम्पलीफाई करना है, isn't it? I will show you the image. In this image only you will be able to understand. Okay. So if your primers का minimum जो length होता है वो 18 to 24 nucleotides long होता है. Okay, so that is the average length of the primer. So we sometimes उससे longer primer भी use कर सकते हैं, उसके shorter primer भी use कर सकते हैं, लेकिन जो standard length है वो 18 to 24 nucleotides है. Okay, so we sometimes use longer primers for certain applications, but it is usually not a good idea to have very long primers. 18 to 25 nucleotide is fairly standard. It is also important that the TM is the melting temperature. Okay, melting temperature क्या है? I will be talking about that. So the TM of the primers should be similar to each other. मतलब forward और reverse primer का जो TM है वो almost same होना चाहिए, ठीक है? With a few degrees of मतलब within a few degree of Celsius variation हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं कि forward primer का TM 15 डिग्री है और reverse primer का TM 40 डिग्री है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? The relationship between temperature and the annealing of primers to a target sequence is a sigmoidal curve. Sigmoidal curve मतलब एक बढ़ता है तो दूसरा घटता है. Okay, so as the temperature increases, more and more hydrogen bonds are required to keep the two pieces of DNA bound to each other. So जितना मेरा टेम्परेचर बढ़ेगा, टेम्परेचर एज इन मेल्टिंग टेम्परेचर जितना बढ़ेगा उतना ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स होना पड़ेगा मेरे पास in order to keep the two pieces of DNA, keep the two strands of DNA bound to each other. Okay, so melting temperature को हम कैसे define करेंगे, जो हम बोल रहे थे, so it is a temperature at which 50% of the primers will be bound to the template and 50% will not bound. ठीक है, मतलब अगर मेरे पास सोचो 50 रिवर्स प्राइमर है, सो मेल्टिंग और उसका मेल्टिंग टेम्परेचर अगर रिवर्स प्राइमर का मेरा 15 डिग्री सेल्सियस है, ओके, उसका मतलब 15 डिग्री सेल्सियस में उस 50 प्राइमर्स में से 25 प्राइमर्स मेरे डीएनए के साथ बाइंड हो चुका होगा. डीएनए के साथ मतलब कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड के साथ वो बाइंड हो चुका होगा टेम्पलेट डीएनए के साथ. सो दैट इज द डेफिनेशन ऑफ द melting temperature. Okay, so at lower melting temperature more primers will bind to the template. Obviously जितना मेरा लोअर टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा प्राइमर मेरे टेम्पलेट के साथ बाइंड करेगा, क्योंकि मेल्टिंग टेम्परेचर का मतलब ही ये है कि 50% बाइंड किया है, 50% नहीं बाइंड किया है. As the temperature gets lower, the chances of the primers annealing to sequences that are not perfect matches will increase. तो जितना मेरा मेल्टिंग टेम्परेचर कम होता जाएगा उतना चांस बढ़ता जाएगा कि वो बिना कॉम्प्लीमेंट्री का भी वो बाइंड कर जाएगा डीएनए के साथ, और वही चीज मुझे नहीं चाहिए, isn't it? बिकॉज वो चीज अगर होगा, इफ द प्राइमर गोज एंड बाइंड्स टू दोज पार्ट्स व्हिच आर नॉट इवन कॉम्प्लीमेंटरी, दैट मींस माय रिजल्ट विल नॉट कम, है ना? तो उस केसेस में मेरा गलत प्रोडक्ट एम्पलीफाई हो जाएगा. एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस बियॉन्ड द टीएम, fewer and fewer primers are able to bind to the template until finally none can. Okay, so this is the image that I've shown over here. तो ये देखो, ये एक मेरा स्ट्रैंड है, एक स्ट्रैंड मेरा 5 प्राइम टू 3 प्राइम है, एक डीएनए स्ट्रैंड, और ये मेरा दूसरा डीएनए स्ट्रैंड है 3 प्राइम टू 5 प्राइम. तो मुझे दोनों को ही एम्पलीफाई करना है, बोथ ऑफ देम आर द टेम्पलेट डीएनए, इजंट इट? बस वो स्ट्रैंड अलग हो चुका है ड्यू टू डीनेचरेशन, व्हिच इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ द पीसीआर रिएक्शन, इजंट इट? तो उसके बाद मेरे पास रिवर्स प्राइमर है, ठीक है. रिवर्स प्राइमर क्या होगा, जो मेरा लोअर स्ट्रैंड है उसके साथ सेम रहेगा और अपर स्ट्रैंड के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री रहेगा. सो दिस इज द अपर स्ट्रैंड. सो अपर स्ट्रैंड जो है उसके लिए मुझे रिवर्स प्राइमर देना होगा, क्योंकि उसी के साथ वो कॉम्प्लीमेंट्री होगा. एग्जैक्टली व्हाट आई मेंशन इन द प्रीवियस स्लाइड. और जो मेरा लोअर स्ट्रैंड होगा डीएनए, उसके लिए मुझे देना होगा फॉरवर्ड प्राइमर, इजंट इट? तो वो धीरे धीरे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री सीक्वेंस के साथ वो जुड़ता जाएगा, सी ए टी टी ए जी सी ऐसे करके. So that is the complementary binding, isn't it? So for many thermostable polymerases, we choose an annealing temperature of 2 to 5 degrees Celsius below the TM. क्योंकि मुझे TM पहुंचने से पहले ही सारा काम करना होगा. जैसे ही वो TM इंक्रीज हो जाएगा, हमारा दूसरे जगह में जाके वो बाइंड करने लगेगा. If there is a large difference in the TM of the two primers, then you make the annealing temperature 2 to 5 degree below the higher of the TMs. Though some people strongly recommend using 2 to 5 degree Celsius below the average of the TM. So दोनों प्राइमर का TM का जो एवरेज होगा उससे एटलीस्ट 5 डिग्री मुझे कम रखना है एनिलिंग टेम्परेचर. ओके,
If primers are fairly short, you can make a rough estimate of the TM by making the number of Gs and Cs in the sequence and multiplying by 4 degrees Celsius and the number of A's and T's and multiplying by 2 degrees Celsius. क्योंकि A T के बीच में 2 बॉन्ड रहता है, GC के बीच में 3 बॉन्ड रहता है, हाइड्रोजन बॉन्ड्स. ओके. This estimate is based on the idea that it takes 2 degrees Celsius to break the hydrogen bonds between one AT pair and 4 degrees Celsius to break the hydrogen bonds between GC pair. क्योंकि obviously जिसमें hydrogen bond ज़्यादा रहेगा उसके लिए temperature ज़्यादा लगेगा break करने के लिए, isn't it? For short primers, this is a fairly accurate way to calculate the TM. But for longer primers, calculating the actual TM is a bit more complex than that because the position of the nucleotides in the primer makes a difference. Several GC pairs in a row might somewhat increase the TM, while runs of AT pairs could lower it. So this formula is something that you need to remember as far as your MCQ questions or assessment questions are concerned. ठीक है कि कैसे हम TM को कैलकुलेट करेंगे. तो पहले हमें देख लेना है कि कितना गुआनिन और साइटोसिन है और कितना एडेनाइन और थायनिन है मेरे प्राइमर मतलब मेरे टारगेट सीक्वेंस में. वो पहले कैलकुलेट करना है, उसके बाद उसको जोड़ना है क्योंकि G हमेशा C के साथ पेयर करेगा. सो टोटल नंबर ऑफ GC जोड़ लो, कैलकुलेट कर लो और उसको मल्टीप्लाई करो 4 डिग्री से क्योंकि उसमें 3 हाइड्रोजन बॉन्ड है तो ज्यादा टेम्परेचर चाहिए. और फिर A और T को जोड़ के उसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से क्योंकि हमें उसमें कम टेम्परेचर चाहिए क्योंकि 2 ही हाइड्रोजन बॉन्ड है. सो दैट इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग द TM. ओके. So this is again the graph that I have shown over here. So x axis में मेरा TM है, that is melting temperature है, और y axis में है percentage of bases unpaired. So देखो जितना हमारा melting temperature ज्यादा होते जा रहा है उतना हमारा सेपरेटेड स्ट्रैंड्स का अमाउंट बढ़ते जा रहा है क्योंकि तब जाके हमारा प्राइमर बाइंड नहीं कर पाएगा, वो कॉम्प्लीमेंट्रिटी वो लूज कर जाएगा और वो धीरे धीरे किसी के भी साथ जाके बाइंड करने लगेगा. तो जितना मेल्टिंग टेम्परेचर हाई होते जाएगा उतना मेरा सेपरेटेड स्ट्रैंड ज्यादा दिखेगा और जितना मेल्टिंग टेम्परेचर कम रहेगा उतना डबल स्ट्रैंडेड हेलिक्स बनेगा. और एग्जैक्टली जो मेल्टिंग टेम्परेचर होगा उस पॉइंट में मेरा अनपेयर्ड बेस 50% रहेगा, मतलब आधा बेस पेयर हो चुका है, आधा बेस पेयर नहीं हुआ है. ओके. सो दैट इज द सिंपल कॉन्सेप्ट. Okay, now how will we get the product that we want? What is the stringency in PCR? So it requires that the conditions are adjusted so that only a perfect match between the primers and the template will be tolerated. If the conditions are too stringent, we will not get any detectable product because there will be not enough primers that can bind the target DNA and make the product. If the conditions are not stringent enough, we can amplify the artifacts, products that are not the intended one. मतलब जो product हमें मिलेगा amplified वो हमें नहीं चाहिए होगा. Having a reasonable amount of template as already discussed is important because too little template has the effect of increasing the stringency, and having too much can promote interactions between primers and target sequences that are similar but not identical to the intended target sequence. This is a concentration effect which results in lower stringency. Other factors will also have a strong effect on stringency like the concentration of MgCl2 in the buffer and the annealing temperature that are being used. Now talking about magnesium concentration. So magnesium cations are required cofactor for DNA polymerases. Therefore, leaving this out of the reaction can result in no product due to insufficient activity of the polymerase. तो अगर polymerase को activate करने का सामान नहीं रहा, that is magnesium, तो हमारा PCR का जो reaction है वो होगा ही नहीं. Okay, तो कोई भी amplification होगा ही नहीं. Mg2 plus ions also stabilize double-stranded DNA, in this case stabilizing the template primer binding. This helps to promote the synthesis of the desired product. In some cases, for a particular template and set of primers, a slightly higher or lower magnesium concentration might be best. It is sometimes necessary to determine the optimal conditions empirically. TAC and other polymerases are often provided with a buffer without MgCl2, one with a standard concentration of MgCl2, and a tube of MgCl2 that can be used to make a buffer with a non-standard magnesium concentration. Optimization is necessary because a concentration of Mg2 plus that is too low can lead to little or no product, and a concentration that is too high can overstabilize the interaction between the DNA template and the primers. If this happens, then the primers can bind to the wrong target sequence and potentially amplify the wrong products. If the magnesium concentration is too high, then the annealing temperature will be too low, or both,
then the primers are able to bind to sequences in the template that are similar to your target sequence. A few mismatches at either the 5 end on of the primer or somewhere in the middle may still allow amplification to proceed. If this happens, you now have your primer sequence attached to the wrong product sequence, and in the next PCR cycle, those wrong product will be amplified. Artifact bands may also result from contaminating DNA template. In that case, appropriate controls can help you detect a contaminant, and a good lab practice will help you avoid contamination. Now we will be talking about the controls also, positive control and negative control, very important. Okay, so before that, we will just have a short discussion about annealing temperature. So it must be chosen so that the primers can only bind to the intended targets. If the annealing temperature is too high, then again the primers will bind to the uh, intended target, but not enough of them will be able to bind, giving little or no product. और अगर annealing temperature बहुत कम होगा तो वो primer जाके दूसरे sequences के साथ bind कर जाएगा, जिससे जिससे हमारा जो desired product है वो हमें नहीं मिलेगा. Okay, so once the primers have extended a little, they become template for the wrong sequence to be amplified. If the artifact product is smaller than the intended product, you may see much more of the wrong product than the right one. This is because smaller products are favored in the PCR reaction. They can be completed faster, so more can be made in the same time. Suppose the enzyme can add 1000 nucleotides per 30 seconds. That means it can make twice as many 500 nucleotide pieces than 1000 nucleotide pieces in the same time. Obviously, a good way to avoid artifacts is to be careful in setting up the PCR reactions. This should be kept on ice at all times. Even if false priming occurs, the enzyme is not able to extend the primers because of the low temperature. So again I have shown this image. So ये basically हर एक stages दिखाता है. So सबसे पहले हमारा denaturation होगा, दोनों strand अलग हो जाएगा. उसके बाद see both the strands are denatured. उसके बाद हमारा annealing होगा, see reverse primer और forward primer आ गया. उसके बाद हमारा extension होगा. Okay, and this is the graph. Okay, so these are the number of cycles and this is the detection level. So number of cycles जैसे ही बढ़ता जाएगा हमारा detection level भी बढ़ता जाएगा. Isn't it to see? पहले जब 30 to 40 जब around 5 cycles हुआ है तब detection level almost है ही नहीं, मतलब amplification उतना हुआ ही नहीं. और जैसे ही हमारा number of cycles बढ़ता गया उतना इस level में अगर आ जाएंगे तो detection level is optimal, मतलब जितना होना चाहिए. Okay. Now coming to use of controls, positive and negative control, very important. So positive control क्या है? Positive control मतलब जिसका result हमेशा हमें positive दिखेगा. तो क्यों वो important है? ये देखने के लिए कि हमारा system में गड़बड़ है या नहीं. तो अगर positive control positive आ रहा है और हमारा sample negative आ रहा है या positive आ रहा है, उसका मतलब हमारा setup सही है, reagents सारे सही है. सो दैट इज द यूज ऑफ पॉजिटिव कंट्रोल. और नेगेटिव कंट्रोल का यूज क्या है? नेगेटिव कंट्रोल हमेशा नेगेटिव ही आएगा. तो अगर हम देख रहे हैं कि नेगेटिव कंट्रोल में भी पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव कंट्रोल में भी हमें बैंड दिख रहा है या डीएनए मिल रहा है, दैट मीन्स देयर इज कंटामिनेशन. Okay, so that is the utility of positive and negative control. So the positive control includes all the same reagents as the experimental PCRs that we are setting up, and it all includes a known template and primers that reliably generate a band of a known size under the conditions of our experiment. And negative controls are used to detect or prevent any type of contamination. So if we do not see a band in the negative control, that means हमारा result सही है, contamination नहीं है. But if we see a band in the negative control, then we cannot trust the PCR result of the patient sample, क्योंकि ये हो सकता है कि हमारा sample हमारा जो reagents है वो contaminated है. So in that case we have to freshly prepare the reagents, master pinks भी freshly prepare करना होगा, equipment को clean करना होगा, and फिर से हमें reaction run करना होगा. Okay, so see, so यहाँ पे जो हम देख रहे हैं ये हमारा negative control है OT, that is the negative control. तो यहाँ पे negative control में भी band आ गया है, that means हमारा जो रिजल्ट है वो गड़बड़ है, कंटेमिनेशन है, हमें फिर से करना होगा, सब कुछ सही सलामत फिर से बनाना होगा, क्लीन करना होगा, फिर से करना होगा. और इसमें ओटी में देखो कोई भी बैंड नहीं आया है, दैट मीन्स प्रॉपर है, कोई कंटेमिनेशन नहीं है. और पॉजिटिव कंट्रोल में सीन क्या है? इसमें देखो ओटी में कोई भी बैंड नहीं आया है, मतलब कि आना था, क्योंकि वो पॉजिटिव कंट्रोल है, आना था बट नहीं आया है, दैट मीन्स कोई गड़बड़ हुआ है, किसी ना किसी रिएजन में कोई प्रॉब्लम है. ठीक है, और इसमें ओटी में हमारा जो है बैंड आया है, दैट मीन्स पॉजिटिव कंट्रोल ने काम किया है.
So everything is okay. Okay. So there is another type of contamination that can happen when amplifying human DNA, and that is contamination that occurs as the reactions are being set up. For instance, a flake of the researcher's skin can fall into the tube. That's why wearing gloves, masks, these are very important. If the PCR was one where different people might generate bands of different sizes, such as for forensic work, then one strategy for detecting this type of contamination would be for the operator to routinely run a reaction containing their own DNA as a reference. This will allow detection of contamination as well. Now talking about types of PCR. So सबसे पहले we have gradient PCR, then we have touchdown PCR. So gradient PCR requires a special thermocycler that allows the annealing temperature and also the cycling times to differ in different parts of the machine. And touchdown PCR is used to prevent background or artifact bands. In this case, the machine begins the cycling program using an annealing temperature that is definitely too high, and every few cycles, the annealing temperature is dropped a little bit. This means that during the beginning stages of amplification, the conditions have the highest possible stringency. Artifact bands cannot form because the annealing temperature does not go low enough for false priming until the tube is already full of a lot of molecules that are the correct ones. These act as the template for additional cycles of amplification. After that, we have qPCR, which is very important, that is quantitative PCR, which will allow us to compare copy number of a target sequence to a set of standards and assess how highly expressed a certain gene is in a certain tissue. It involves monitoring the PCR reaction as it proceeds and determining whether the amount of product that has been made passes a certain threshold. And lastly, we have primer modification, where the PCR primers can be modified for many purposes, and we can include extra sequences on the 5' ends of our primers to aid in cloning. Cloning purpose के लिए use होता है. Okay, so I think that's it. So we are done with working with nucleic acids part. 4 lectures I have done total in this part, in this topic. We will be soon moving on to the next important subtopic of genetic engineering. Till then, thank you and goodbye. Please like, share and subscribe ITLS Academy.